Yes, after reconnection, I forgot to start the recording, but this is still, I am in 23rd minute of my lecture and I'm still revising what we did last time. So I hope this is not a great loss. An important point that I have just discussed is that हम किसी भी डिग्री की पोलिनोमियल इंटरपोलेशन कर रहे हैं, जब हम डिवाइडेड डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं तो all divided differences, first order, second order, third order, fourth order, fifth order, they are all evaluated starting at x naught, the first x value that we use. But whether you go for second degree, third degree, fourth degree, or fifth degree, you need to make the divided difference completely. Because fourth order divided difference मैं नहीं लिख सकता अगर मुझे एक भी चाहिए 5 पॉइंट्स के बगैर, तो पहले 5 पॉइंट से जितने डिवाइडेड डिफरेंस बनेंगे वो सब बनाने पड़ेंगे। लिहाजा अगर मुझे कुछ डेटा सेट दिया हुआ है तो जिस तरह अभी हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जैसे थर्ड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस है दिस वन, ये कैसे बन रहा है हमें ये पता होना चाहिए। द डिफरेंस ऑफ टू सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस continuously divided by what range of x value, 4.6 minus 1.2, that is b7 minus b4, because third order divide difference लिखने के लिए मुझे 2x छोड़ने हैं. So we have to understand, we are just to understand first the how the divided difference table has to be developed, and after that we go for the estimation. X is equal to 4 पे estimation की बात हो रही थी, या मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया. And let us see what मैंने फार्मूला जो है वो एक्चुअली वैल्यूज डाली हैं फार्मूले के अंदर. मुझे करना था x इज इक्वल टू 4 पे इंटरपोलेट. ना हमने इससे पहले प्रॉब्लम जो रिवाइज की उसमें ये बताया था कि अगर 4 लाइज बिटवीन सम टू नंबर्स ऑफ x, 2x वैल्यूज, तो मुझे अगर थर्ड डिग्री के लिए जाना है तो 2 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे. लेकिन आप नोट करें कि मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं किया. आई स्टार्टेड एट 3.5 x वैल्यू एंड 8.5 y वैल्यू, एंड आई हैव रिटन द फॉर्मूला. Everywhere in place of x, 4 is placed, and first term is multiplied by the first order divided difference, this one, whereas second term is multiplied by this divided difference, which is second order. The third term is multiplied by this, which is the third order. And we got 7.68. Now 7.68, 7 super 68 is a reasonable result. But what if I consider x is equal to 4 पे कर रहा हूँ तो 2 पॉइंट ऊपर के 2 पॉइंट नीचे के, and I recalculate and I get 7.58, which is around 7.6. This is around 7.7. 7.6 is a more reasonable result. And मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ग्राफ दिखाया था वर्ड में, सॉरी, why it's not coming? So I just revised how to use a divided difference interpolating polynomial. यहाँ पे एग्जाम्पल की भी अगर P2 इस्तेमाल करना है तो हमने कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है. P2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर, so we consider divided differences up to second order, and the divided difference table is there, only that part for which we are working, and some results are shown. Selecting different sets of value, 2.8 say 4.6, and what we get, and 3.5 say 5.7.
what we get, uh, and this result seems to be more appropriate as compared to this one. Uh, that's it. That's it for as far as the revision of how what is Lagrange formula, how to use that, what is divided difference interpolating polynomial, and how to use that. So the next assignment that I will be giving you will be on Lagrange interpolation and the divided difference interpolation. And now I'm going to go for the next technique that I'm going to consider for interpolation. Newton's forward difference interpolating polynomial. Uh, when I was introducing what is meant by uh, interpolation, which is an estimation technique, मैंने आपको बताया था कि we collect data in different situations using different procedures. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके दरमियान हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हम कुछ ना कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के मेजरमेंट्स के रिजल्ट रिकॉर्ड करते हैं. एंड मोस्टली अगर हम किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और हम उसमें किसी भी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वैल्यूज़ जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर वैल्यूज़ कंटिन्यूसली अवेलेबल नहीं होती. अब हमारे रिकॉर्डिंग प्रोसीजर जो है उसमें वेराइटीज़ हो सकती हैं. If I have an automated recording procedure, then it is possible कि वो मेरा जो ऑटोमेटेड मशीन है वो एक सेट इंटरवल ऑफ टाइम, 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद एक रीडिंग रिकॉर्ड कर ले. कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करना मुश्किल है और आमतौर पे ऐसा होता भी नहीं. इस सिंपल एग्जांपल में जो जिसमें मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर रिकॉर्ड करना, इसमें टेम्परेचर इज द आउटपुट और y वैल्यू, and what could be the input? I'm only using some thermometer or an electronic thermometer or some automated device that record temperature at regular interval of time. तो टेम्परेचर मेरा आउटपुट या y है. What is the input? What should be used for x value? Anyone listening? Anyone like to respond? Am I connected? Are you able to listen and see what I am discussing? Yes, sir. तो मेरा सवाल ये था कि टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में टेम्परेचर इज द आउटपुट. व्हाट शुड बी द इनपुट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x? ये सराफे, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? नो सर, अच्छा सोच रहा. सोच रहे हो? अच्छा, मेरी जुमला दोबारा गौर से सुनो. आई एम रिकॉर्डिंग टेम्परेचर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एंड आई एम सेइंग दैट टेम्परेचर जो मैंने रिकॉर्ड किया है दैट इज द वैल्यू ऑफ y, टेम्परेचर वैल्यू. व्हाट शुड बी द x वैल्यू? Time. So whenever we record our experimental results that are measurements,
हमारे पास दो वेरिएबल तो हमेशा होंगे ही, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, but we are in this course more focused on uh, two variables, input and output. There are, of course, problems where have one input and two outputs. So multivariate situation में भी interpolation हो सकती है. Now, when we record data at equal interval of time, or we say equally spaced data, so in equally spaced data, we modify our interpolating polynomial. We have some facilities available. क्योंकि difference of every two consecutive x values is constant. इसका मतलब है कि x1 माइनस एक्स नॉट जो है वो भी कांस्टेंट है, h कह दीजिए उसको, तो इसका मतलब है x1 जो है x नॉट से एक स्टेप आगे, 1h. x2 माइनस x1 जो है वो भी h है, इसका मतलब x2 इज x1 प्लस h, बल्कि जबकि x1 जो है वो x नॉट प्लस h है, तो इसका मतलब है x2 जो है वो स्टार्टिंग x वैल्यू से दो स्टेप्स आगे है, x3 जो है वो स्टार्टिंग x वैल्यू से 3 स्टेप आगे है, इसी तरह kth x वैल्यू जो है स्टार्टिंग वैल्यू से k स्टेप्स आगे है, स्टेप साइज इज h. Now, once we understand this point, that every x value can now be written in terms of the starting x value. With an addition of number of steps, the current x value is ahead of x naught. Ahead by how many steps? K is the number of steps and h is the step size. It is constant, so we can use that. But if the data is not equally spaced, we cannot have this arrangement. In that case, this will not be a constant, and every interval of two consecutive x value will be of different length. So what we are going to develop is not for that. हाँ, हमने इससे पहले जो दो टेक्निक्स स्टडी किए हैं, लग्रांज फार्मूला स्टडी किया है और फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, उन दोनों में हमने इसका जिक्र ही नहीं किया था कि डेटा हमारा कैसा है. इक्वली स्पेस्ड है तो कुछ आसानी होगी, लेकिन वो दोनों टेक्निक्स जो है वो अनइक्वली स्पेस डेटा के लिए सूटेबल है. लेकिन एज एंड व्हेन वी हैव अ डेटा सेट व्हिच इज इक्वली स्पेस्ड, in that case we have to use, we can of course use the previous two, but this is better to use the technique that we are going to develop here. अब आप जरा गौर करें कि जब मैं डिवाइड डिफरेंस लिखूंगा तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर लिखने की मुझे जरूरत है कि नहीं है? मुझे जरूरत ही नहीं होनी चाहिए डिनोमिनेटर लिखने की. And that is the idea behind defining forward differences, how the data is moving forward. So first order differences. तो पिछले आर्टिकल में हमने ये यहाँ इस बात को सबसे पहले अहमियत दी थी कि डिवाइडेड डिफरेंस कैसे बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. यहाँ जब इक्वली स्पेस डेटा है तो अब हम डिफरेंसेस ले रहे हैं, सिर्फ रेशियोज नहीं ले रहे. हाउ वाई इज गोइंग फॉरवर्ड, वेदर इंक्रीजिंग और नॉट. गोइंग फॉरवर्ड मीन्स के डेल्टा वाई नॉट क्या है, वाई वन माइनस वाई. डेल्टा वाई वन क्या है, वाई टू माइनस वाई वन. डेल्टा वाई टू क्या है, वाई थ्री माइनस वाई. डेल्टा वाई आई क्या है, वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई. तो इस नोटेशन में डेल्टा वाई नॉट में जो सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो सबस्क्रिप्ट बाद में आ रहा है और इससे आगे का सबस्क्रिप्ट पहले. डेल्टा वाई वन, तो वाई वन इधर आ रहा है, वाई टू इधर आ रहा है. डेल्टा वाई टू, तो वाई टू इधर आ रहा है और उससे एक स्टेप आगे वाई थ्री. तो डेल्टा वाई आई में वाई आई यहाँ पे आ रहा है, तो वाई आई प्लस वन में से सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है.
तो आखिरी जो डिफरेंस बना सकता हूँ, अगर मेरे पास डेटा 0 x0 y0 से लेके xn yn तक है, तो आखिरी जो बनेगा उसकी नोटेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जो बनेगा yn माइनस 1 कहलाएगा, yn माइनस yn माइनस 1, क्योंकि yn प्लस 1 मेरे पास है ही नहीं. So this is how we make the first order differences. What are the second order differences? Again, second order differences are difference of two first order differences. Starting at s naught, तो मैं पहले डेल्टा y1 यहाँ से उठा के लिखा मैंने, डेल्टा y0 यहाँ से उठा के लिखा, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो पता लगा साहब ये y2 माइनस 2y1 प्लस y0. So second order divide forward difference starting at x0 means y2 minus 2y1 plus y0. मैंने इसको पढ़ा सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस स्टार्टिंग एक्स नॉट, हालांकि एक्स का कहीं जिक्र नहीं है, हाँ एक्स का ताल्लुक यहाँ इस सब्सक्रिप्ट से आ रहा है कि मैं वैल्यूज कौन सी ले रहा हूँ. वाई नॉट मीन्स वाई एट एक्स नॉट, वाई वन मीन्स वाई एट एक्स वन, वाई टू मीन्स वाई एट एक्स टू. So that facility we are using for making second order forward differences. जो x1 पे से शुरू होगा उसमें एक एक इंडेक्स का पीछे के मुकाबले में इजाफा हो जाएगा. दिस सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ टू फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस. कौन से वाले? नेक्स्ट टू, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू. इस तरह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस बनेंगे. और जैसे y2 डेल्टा स्क्वायर y2 है, तो y2 लोएस्ट इंडेक्स है और फॉर्मूला गोज एज y4 माइनस 2y3 प्लस y2. गोइंग फॉरवर्ड हम इस तरह सारे सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस बना सकते हैं. थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस बनाने हैं तो दैट विल बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ difference of two second order forward differences. y0 में डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y2 होगा. तो डेल्टा स्क्वायर y1 क्या है? डेल्टा स्क्वायर y1 is this y3 minus y2 plus y1. And what is delta square y0? Delta square y0 is y2 minus 2y1 plus y0. तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमने लिखा तो हमारे पास आया y3 minus 3y2 plus 3y1 minus y0. When we developed third order forward difference starting x1, that will come out to be y4 minus 3y3 plus 3y2 minus y1. Third order forward difference starting x2 means y5 minus 3y4 plus 3y3 minus y2. Let us note few things. What's the difference between the smallest index appearing and the largest index? 3 minus 0. That is, it is a third order forward difference. In this one, 4 minus 1. That is 3, because it is a third order forward difference starting at x1. Here 5 minus 2. This is y at x5 and this is y at x2. 5 minus 2 is 3. That means it is a third order forward difference starting at x2. एक चीज तो ये हो गई नोट करने की. दूसरी चीज इनमें नोट करने की ये है, ये है a minus b. It is like a minus b whole square. क्या कोफिशिएंट होते हैं a minus b whole square के? When you write down the formula g a minus b whole square के कोफिशिएंट्स क्या आते हैं? 2. 1 minus 2 1. Yes. और a minus b whole cube के कोफिशिएंट्स क्या आते हैं? 1 minus 3 plus 3 minus 1. हम इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं अगर आपको याद हो तो. a minus b पावर 4 के कोफिशिएंट्स आते हैं 1 minus 6
plus 4 minus 6 plus 1, and they appear in the next ordered forward difference that we construct. So fourth order forward difference starting at x naught, and we have y4, यहाँ पे y naught है, तो largest y index आएगा 4, because 4 minus 0. So y4 minus 4y3 plus 6y2 minus 4y1 plus y naught, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया using the properties of binomial coefficient. और fourth order forward difference is difference of two third order forward differences, और ये सारे सब्सटीट्यूट इन दोनों को इसके अंदर सब्सटीट्यूट करके लिख लो, यही बनेगा. So we get a sort of a pattern and uh, pattern of indices in any order forward difference. Indices कैसे आ रहे हैं और coefficients कैसे आ रहे हैं. So that makes life more comfortable. And now we can relate between the divided difference and the forward difference. Recall that a first order divided difference starting at x naught is denoted and defined by this. But for equally spaced data, we have introduced that x1 minus x naught is equal to h. Whereas y1 minus y naught is given this new notation and called forward difference starting at x naught, first order. इसका मतलब ये हुआ कि मैं फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस को यूं लिख सकता हूं, इसका न्यूमरेटर डेल्टा वाई नॉट, इसका डिनोमिनेटर एच. So divided difference of first order becomes first order forward difference upon h if it starts at x naught. If it starts at x1, it is delta first order divided difference starting at x1 is delta y1 upon h. First order divided difference starting at x2 is delta y2 upon h, etc. etc. और इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके या सिंप्लीफाई करके यूं लिख सकते हो, बीच में जो हमने डेफिनेशंस लिखी हुई डिवाइडेड डिफरेंसेस की वो हटा दें. डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज दिस. So first order divided difference is related to first order forward difference. Let us look at a second order divided difference, which is defined as the difference of two first order divided differences divided by the range of x value. First order divided difference starting at x1 means delta y1 upon h. First order divided difference starting at x naught means delta y naught upon h, which simplifies to 1 upon 2h square. अच्छा, x2 minus x naught, तो इन दोनों के दरमियान दो स्टेप्स का फर्क है, और x2 जो है वो x naught plus 2h है, लिहाजा यहाँ पे डिनोमिनेटर 2h होगा. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस में डिनोमिनेटर h है, सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंसेस में डिनोमिनेटर 2h आएगा हमेशा. ये ऊपर वाला जो h है ये मिलके 1/2h square हो गया, and we see that this is now numerator is now difference of first order differences that makes a second order difference. Similarly, uh, a second order divided difference starting at x naught is 1/2h square into second order forward difference. Second order divided difference starting at x1 is 1/2h square into second order forward difference starting at x1 and so on. इस तरह से हम सारे second order divided differences define कर सकते हैं. Coming to a third order divided difference, अब इन details में जाने के बजाय जिसको आप खुद explore कर लीजिएगा, I just say that यहाँ पे structure है 1/2h square delta square. जब थर्ड ऑर्डर लिखूंगा तो 1/3 फैक्टोरियल क्यों हो जाएगा, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि थर्ड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस में नीचे 3 स्टेप्स आ रहे हैं, जबकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंसेस में 2 स्टेप्स आ रहे थे. तो 3 into 2 बनेगा, 3 into 2 into 1 कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल. थर्ड ऑर्डर है लिहाजा h2 आएगा. सेकेंड ऑर्डर में h स्क्वायर आया था, फर्स्ट ऑर्डर में नीचे h आया. फर्स्ट ऑर्डर में
न्यूमिनेटर जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस था, सेकेंड ऑर्डर डिवाइड डिफरेंस में न्यूमिनेटर सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस था. In third order divided difference, numerator will be third order forward difference, and so on. The third order differences can be related with the third order divided differences. Similarly, the fourth and fifth and so on, we can do that. इसका मतलब है कि जो मेरा divided difference interpreting polynomial था, उसमें अब हर जगह मैं ये सब चीजें रख देती हूँ. क्या क्या रख? There are lots of things that I can replace. Mm, Wherever there is x1, I can replace that by x naught plus h. Wherever there is x2, I can replace that by x naught plus 2h. Wherever there is x3, I can replace that by x naught plus 3h. Wherever there is x10, I can replace it by x10, x naught plus 10h. Whereas divided differences can be replaced by the formulas that we have just developed. 1, 2, uh, 4, 5, etc. So many things can be replaced. What will replace x itself? तो हमें यह सोचना चाहिए कि ये जो x है ये क्या है. x जो है एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि मैं इंटरपोलेट कर रहा हूं. अब वो कौन सी दो x वैल्यूज के दरमियान है. हम कहते हैं अच्छा भाई ये एक्स के और एक्स के प्लस वन के दरमियान है. एक्स के खुद कहाँ है? एक्स के इज के स्टेप ahead of x naught. Xk plus 1 is k plus 1 steps ahead of x naught. So that means I am interpolating between xk and xk plus h, which are replaced by x naught plus kh and x naught plus k plus 1h. Now k is an integer that is giving the number of steps. Xk is ahead of x2. K plus 1 is the next integer giving the number of steps that xk plus 1 is ahead of x naught. Now k and k plus 1 are two consecutive integers. If x lies between them, it should be ahead of x naught with number of steps more than k steps but less than k plus 1 steps. तो इसका मतलब वो आधा पौना स्टेप बीच में आएगा. To for write down that आधा पौना step, we use a number s, sh, and we say that s is a number between the two consecutive integers k and k plus 1. If x is right in the middle of the two x values, so middle will be expressed by s is equal to half. If x is more inclined towards kth x, for example, only 10th part of the step size, then s will be 0.1, etc. So s has to be some number, s which is k is an indicator that I'm talking about xk, the value of x, which is k steps ahead of x naught. K plus 1 indicate I'm talking about xk plus 1, a point, a value of x, which is k plus 1 steps ahead of x naught. So if I consider two integers k and k plus 1 and select a number in between, this real number, which will have some decimal part, will be larger than k, less than k plus 1. So this s is representing my x, where I am going to interpolate. And it means that this x is now s steps ahead of x naught. How many steps? Steps more than k, but less than k plus 1. In this way, the formula to obtain s is sort of this formula. So wherever there is x, what can I do? I can use x
not plus sh. So there are lots of substitution. Wherever x is there, I will place x naught plus sh, x naught as it is, x1 replaced by x naught plus h, x2 replaced by x naught plus 2h, and divided differences replaced by forward differences divided by appropriate uh, constant. After doing all this exercise, which I have shown here in these algebraic steps, what I am left is with this formula. I want to you to go through this substitution process, cancellation of terms, and simplification, and ultimately, we note that now previously our interpolating polynomial was a function of x. The unknown was x. What we have just done, gone through, and we have obtained a polynomial where the unknown is s, which replaces x. Remember, s is just an indicator कि हमारा x value जो है वो k और k plus 1 के दरमियान कहाँ पे. So the new form of the interpolating polynomial is this form y naught plus s times first order forward difference s into s minus 1 upon 2 factorial into second order forward difference s into s minus 1 into s minus 2 upon 3 factorial third order forward difference. And note कि ये s into s minus 1 upon 2 factorial s into s minus 1 s minus 2 upon 3 factorial ये भी binomial coefficients हैं. So पहली टर्म में कोई s नहीं है, दूसरी में एक s है, तीसरी में s minus 1 है, चौथी टर्म में s minus 1 s minus 2 है. Now this is first order term. It has only s minus 0. This is second order term. It has last factor s minus 1. This is third order term. The last factor of s is s minus 2. This is another order term. The last factor of s should be s minus n minus 1. That means 1 less than the order. Divided by जो order है उसी order number का factorial. So this is the new format of interpolating polynomial. We remember patterns more easily. Mathematics, modern definition of mathematics is the study of patterns. If you understand the pattern, then everything becomes easier. And I hope you also must have noted while studying your programming courses that there are patterns everywhere. There are logical patterns. If you understand those logical patterns, you become a better programmer. If you understand how to put those logical structures in a logical order, you become a better programmer. So if you understand the structure, the pattern in the structure and the formulas, then you understand mathematics. We are here given a data set which is equally spaced. Note what is the step size. 0 से 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2.5. So we have a step size of 0.5. मुझे कहा गया है कि y estimate करें when x is equal to 2.3 using third degree forward difference. Now if I use, I have to use third degree forward difference or fourth degree or fifth degree. मुझे देखना ये है कि मेरे पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं. 1 2 3 4 5. थर्ड डिग्री के लिए मुझे 4 पॉइंट्स चाहिए, बहुत सारे अवेलेबल हैं. Next, I have to see where I have to interpolate. I have to interpolate at 2.3. मुझे x value 2.3 between 2 and 2.5 और थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना है. तो 2 और 2.5 के दरमियान जब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं.
मैं रेंज x इज इक्वल टू 1 से 2.5 इस्तेमाल करूं या 1.5 से 3 इस्तेमाल करूं? व्हाट्स योर सजेशन? I have to interpolate at x is equal to 2.3, which is between 2 and 2.5. अब मैं कौन सी x वैल्यूज की रेंज इस्तेमाल करूं, 1 से 2.5 तक या 1.5 से 3 तक? Are you listening carefully? I repeat my question. जी, कह रहे हो कुछ राफ? नो सर। 2.3 पे एस्टिमेट करना है मुझे भाई. 2.3 लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5. अब बात यह है कि मैं कौन सी एक्स वैल्यू, 4 एक्स वैल्यू इस्तेमाल करूं थर्ड डिग्री के लिए. 2.3 पे एस्टिमेट करना है. 1 से 2.5 तक 4 वैल्यू इस्तेमाल करूं या 1.5 से 3 तक 4 वैल्यूज इस्तेमाल करूं? I have to interpolate between at 2.3, which is between 2 and 2.5. I have to use a third degree formula, which uses 4 points. So my choice of part of this data table would be from सर 1.5 से 3 तक कर सकते हैं. 1.5 से 3 तक कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे. इसलिए कि ये तो सीधा सीधा थर्ड डिग्री का प्रॉब्लम है ना. तो जिस जगह इंटरपोलेट करें 2.3, उससे 2 पॉइंट पीछे और 2 पॉइंट आगे, खत्म हो गई बात. लेकिन मैंने यहाँ कलर किया हुआ है 1 से 2.5 तक. इसका मतलब है मैं गलत चॉइस इस्तेमाल कर रहा हूँ. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो ये तो 2.6. अच्छा, चलो जी. मैंने 1 से 2.5 तक की डिफरेंस टेबल जो है उसको कलर कर दिया था यहाँ पे. ठीक. तो अब ये स्टार्टिंग एक्स है, यानी एक्स नॉट जो है वो 1 है. So x naught y naught is 1, 5.2, x1 y1 is this, and so. Delta y naught, पहली दो y वैल्यूज का डिफरेंस, एंड सो ऑन. डेल्टा y नॉट स्क्वायर. तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाले 3 फॉरवर्ड डिफरेंस इस्तेमाल होंगे. उसके बाद s निकालना है. तो भाई s निकालने के लिए हमने कहा था क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h. x minus x naught divided by h. So x is 2.3, x naught जो है वो यानी पहली x वैल्यू मैंने बन ली है 2.3 minus 1 divided by 0.5 which is h, so 2.6. Now 2.6 is the representative of the x value where I am interpolating. I am interpolating at 2.3. 2.3 is from 1. 2.3 is one step up to 1.5, 2 steps up to 2, and 0.6 steps between 2 and 3. That is why the S value here is 2.6, which is representing x is equal to 2.5, but 2.6 is not the value of x, it is the value of s correspondingly, जो कि मुझे इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है. एस वैल्यू निकाली, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल फार्मूला ये है, एस रखना है हर जगह. हमने हमने we have to use the value of s as well as value of फॉरवर्ड डिफरेंसेस. तो अपनी टेबल से हमने ये सब चीज़ें उठा के यहाँ फॉर्मूले में रखी, एंड वी हैव ऑब्टेन 10.97. 10.97. 2 और 2.3 के दरमियान 10.97. इट इज नॉट अ बैड रिजल्ट बाय एनी मीन्स. Graphical representation is there.
जिसमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कर्व फिटिंग टूल्स हैं वो हमें एक्सपोनेंशियल कर्व दिखा रहे हैं। ये हमने कहा कि नहीं भाई ये क्यूबिक कर्व है, y is equal to 10.3876 जो कि x is equal to 2.3 पे इस ग्राफ के लिहाज से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11.28, whereas interpolating polynomial की वैल्यू आ रही है 10.9. So for currently we are talking about polynomial value, not the curve fitting value of Excel tools. यहाँ एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि if we start मैंने तो 1 से स्टार्ट किया था ना, if I start at 1.5 जो कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था, then I get 10.17 and technically this has to be a better result because हमने अब ज़्यादा logical value of x consider की है, 1.5 से शुरू की हैं, so this has to be a better result. So that's it for the development of the forward difference interpreting polynomial. I just go through major things once again. When we have equally spaced data, we first have the facility of every x value can be rewritten as, for example, fourth x जो है वो starting x से 4 steps आगे है और step size constant है, लिहाजा मुझे numbers जो हैं x की values के उनको एसोसिएट करना है कि कितने स्टेप्स आगे हैं स्टार्टिंग वैल्यू से. Then I showed divided differences can be sorry, what are the forward differences, and we will later compare them with the divided differences. So forward difference first order जो है वो y की values के difference है, consecutive y values difference, consecutive y values difference, consecutive y values difference. Second order differences जो हैं वो differences हैं first order differences के, first order differences के, consecutive first order differences, and they can be written in terms of only y values using these structures. Delta square at y delta square y naught is y2 minus 2y1 plus y naught. दो बातें हमने important नोट की यहाँ पे. एक पॉइंट ये नोट किया कि इंडाइसेस अगर डेल्टा स्क्वायर y naught है तो y naught y1 y2 आएंगे. इंडाइसेस का रेंज जो है वो 2 minus 0 इंडिकेट्स द ऑर्डर. अगर डेल्टा स्क्वायर y1 है तो y1 y2 y3 आएंगे. इंडाइसेस रेंज 3 minus 1 second order and so on and so forth. So second order divided differences are defined in this way, the third order, the nth order, and so we have a scheme where we have for equally spaced data, differences of y are only important because differences of x are constant. We had in divided differences in the denominator differences of x, and we then in this development noted that first order divided differences are related to first order forward difference divided by h, whereas second order divided differences are related to second order forward differences divided by 2h square. Third order divided differences related to third order forward difference divided by 3 factorial into h cube, and so on and so forth. Or then we developed a scheme so that a divided difference interpreting polynomial can be converted into forward difference interpreting polynomial. I'm not going through this whole again. Of course, I'm just revisiting what we did new today. In this polynomial, we have to replace divided differences by these new expressions involving forward differences. We have to replace x1, x2, x3
etc. by x naught plus how many steps ahead, and we have to replace x. If it lies between xk and xk plus 1, then it should be represented by some number, real number, between two integers k and k plus 1. And the formula for that is x minus x naught. यानी x naught से कितनी दूर है उसको स्टेप साइज से डिवाइड कर दें तो आपको s की वैल्यू मिलेगी. दैट विल गिव यू a number greater than k but less than k plus 1. Substituting all these things in the divided difference interpreting polynomial, and we obtain this forward difference interpreting polynomial, which is much simpler as compared to divided difference interpreting polynomial. Difference table बनाना भी आसान है because it is just this y minus this y is equal to 1.3, this y minus this y is equal to 1.8, this y into this y is 1.9. So difference table banana. Second order difference of these two first order differences at this one, second order difference 1.9 minus 1.8 and so on. And the use of this for a problem, a sample problem, and we made the two different choices. 2.3 पे इंटरप्रेट करने के लिए मैंने 1 से 2.5 इस्तेमाल किया. So I got this result 10.9, which seems to be good enough according to the spread of the data. 2.3, 9. Y की value 9.5 or 11.9. The data was very well behaving. That is why it is a reasonable result. But if the data is not that well behaving, arbitrary data ho, look at x. जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है. तो ये it's a very well behaved sort of linear or exponential function. इनका behavior ज़रा सीधा साधा होता है. So we don't have any problem by taking either x values 1 to 2.5 or 1.5 to 3 or हाँ बस ये दो choices हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. 1.5 से 3 इस्तेमाल करें, 1 से 2.5 इस्तेमाल करें. So we have slight difference in the result because the data scatter is well behaved. इसलिए इन दो results में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं. We can work out other problems and यहाँ पे जो दो चीज़ें मैंने इस लाइन में लिखी हुई है ना, ये जो आता है डेटा स्कैटर उसका एक्सेल का, उस पर अगर मैं एक्सपोनेंशियल फिट करूँ तो ये फार्मूला बन जाता है, उस पर मैं क्यूबिक फिट करूँ तो ये फार्मूला बन जाता है. उनके जरिए x इज इक्वल टू 2.3 पर y वैल्यू निकालें तो एक्सपोनेंशियल कर्व ये देता है जबकि क्यूबिक कर्व ये देता है. एंड हमारे ये जो क्यूबिक इंटरपोलेशन प्रोनोमियल है वो कुछ और वैल्यू दे रही है. लिहाजा ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं. ये जो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर जो मैंने कहा कि एक्सेल की टूल्स को इस्तेमाल करके Excel provides me facility to make a curve corresponding to. Uh, let me show you one last thing. ये डेटा स्कैटर है. ये डेटा स्कैटर जो है इसकी वैल्यूज कहाँ से आई हैं? एड ट्रेंड लाइन. अब मैं इस पर अगर एक्सपोनेंशियल कर दूं और इक्वेशन भी इस पर डिस्प्ले करूं, ओह डेटा कंप्लीट नहीं है. ये पिक्चर मैंने कहीं और से उठाई है. सॉरी. लेट मी select data from somewhere else. Okay, here it is.
the data here, add trend line, मैंने कहा था exponential और इस पे formula. Why it's taking only 2 points? I don't know. ये वो data ही नहीं है. The data that I was using to demonstrate. चलो time भी बहुत हो गया. Next time I'll start from there. Forward difference. और इसमें जो डेटा है इसकी पूरी एक्सेल शीट और एक्सेल बिहेवियर और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल से मैं काम शुरू करूँगा. ठीक है. So it's almost time, and next time we are going to have a quiz, and I've told you what topics of the quiz, and I hope you are preparing well for your assignment submission, and that will prepare must have prepared you well for quiz, and hope to see you tomorrow, and same time. So I stop recording.